हाँ लिख लीजिए। जी सर। Weighted arithmetic mean. Weighted arithmetic mean. शाबाश। हाँ आज हमारा टॉपिक है वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो टिल डेट हमने पढ़ा है simple arithmetic mean. In simple arithmetic mean, all items were taken equally, or we gave same importance to all the items, same weight to all items. But in weighted arithmetic mean, we give different weights to different items. But sometimes we give greater difference to some items and less difference, less significance or less importance to some items. But so in simple arithmetic mean, we gave same importance and weight to all items, but in weighted arithmetic mean, or weighted mean, we assign or gave different weight and importance to different items. So we do not give here same weight to all items. We give different weight to different items. So, but in weighted arithmetic mean, we assign or give different weight and importance to different items. That is, we give more weight to some and less weight to some. कुछ को हम कम वेट देते हैं, कुछ को हम ज्यादा वेट देते हैं। समझ आता है? तो अच्छा समझ आओ बच्चा सुना व्हाट आई एम टेलिंग यू। सिंपल अरिथमेटिक मीन्स मज ऐसे आसान डेटा दित ऐसे दिवान तिमन सेम वेट, मगर ये दिवान डिफरेंट वेट टू डिफरेंट आइटम्स। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड weighted arithmetic mean. So for example, as households, एग्जाम्पल कुछ दीजिए। क्या सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए। हाँ वही मैं चल रहा हूँ ना, अभी मैं चल रहा हूँ as households, for example, for example घर खानदार, for example, give some more significance to food. अगर इनकम क्या गोडनेथ आना फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या आना फूड, शेल्टर, then clothes, medicine, education. So accordingly this is weight. What is this? This is weight. अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम पहले सोना लाएंगे औरतों के लिए या हम फूड आइटम्स लाएंगे? हम पहले फूड आइटम हाँ मैं पहले अपने लिए ड्रेस लाऊंगा या अपने लिए दवाई लाऊंगा? पहले दवाई लाऊंगा। So we give different weight to different items according to their importance. Thus, as households, for example, we give more significance to food, less to clothes, more to medicine, less to entertainment. Thus,
when different items of a series are weighted according to their relative importance, the average of such series is called a weighted arithmetic mean. Thus, when you can say when different items in a series are weighted according to their relative importance, according to their relative importance, the average of such series or the mean of such series, the average of such series is called a weighted arithmetic mean. Is called a weighted arithmetic mean. Thus, so series yathmas different item eat different weight then according to its importance in the life. Yel is that series average kado is one weighted arithmetic mean. So a weighted arithmetic mean or weighted arithmetic average is thus the mean of weighted items. Thus, a weighted arithmetic mean, thus the weighted arithmetic mean is the mean of what is weighted arithmetic mean? It is the mean of weighted items. It is the mean of weighted items. So, weighted item series banao, that series is average ya mean, that mean banao is weighted arithmetic mean. So, what is the formula for calculating weighted arithmetic mean? Formula kya? We have a simple formula for calculating weighted arithmetic mean. Is on x bar ya w rachna hinge. Small w यहाँ मैं लगाऊंगा ये बन गया weighted arithmetic mean. ये आसान बराबर summation of wx divided by summation of w. समझ आवा? W is weight, x is the values of x. So W, what is W? W is weight. Yes. W is weight and x is variable x. X is variable x. It put x value. So go x. That is x. So this is the meaning of weighted arithmetic mean. Weighted arithmetic mean go mean of the weighted items, or it is the mean of that series in which items are given different weights. Thus, when we assign different weights to different items. For example, mehkas dem ba ak weight. If I put in back nusratas dem back 8 weight. Alag wazan demo prat kunus. Ainas demo back weight. Nazimas demo back weight. So different items are given different weights. For example, lakat misal hana message food, message clothes, message medicine, message education, message shelter. For example, it is value is value x, but the weight.
Padimok weight, yes, 200, yes, 100 value, yes, 50 value, yes, for example, 500 value, yes, 200 value, weight the must panni hisab. For example, yes, 50% weight, yes, 20% weight, yes, 10% weight. So I give weight to different items according to their different importance, according to their importance. Use arithmetic mean or simple arithmetic mean or you sport mean for as individual series, discrete series, continuous series, that's same weight. That's alag weight. Yes, alag weight देंगे. लिख दो तो ये लिखवा, ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया. Yes, sir. जी सर. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. Now we will take it as exercise. 10 बजे कौन सा क्लास होता है आपका? 10 बजे. कोई नहीं. अगर 10 बजे ही हम ले लेंगे ठीक रहेगा कल से. तो ठीक है, डालिए 10 बजे. मैं देख लूंगा शाम को. कैलकुलेट weighted mean from the following series. लिखिए क्वेश्चन. हमें weighted mean निकालना है. We have Marcus, we have weight. Marcus and weight. This is X and this is W. These are the values of X and this is their weight. ठीक है? Marcus is 81, 76. ओ ये बंद करो. सर शोर आ रहा है. ये बंद करो. 81, 76, 74, 58, 70, 73. These are the values. ये हमारे values हैं. तो वेट है 236, 7, 37. So these are the values and this is weight. हमें weighted mean निकालना है. X bar W. ये हमारे लिए फॉर्मूला है summation WX divided by summation of W. Very easy. Very easy. W और X में मल्टीप्लीकेशन करना है, वेट और X में मल्टीप्लीकेशन करना है और उसका टोटल निकालना है. एक तो वेट का टोटल निकालना है, दूसरा WX का टोटल निकालना है. इसको पहले मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. शाबाश. 81 into 2. 162. 162. 162. 3 6 गो 18 8 3 7 अकूत आगे जुतो 228. ये है जी सर. 18 जी सही है सर. 6 चुके 26 6 7 बता 4 है 4 7 8 56 406. यस सर. दूसरा कोई क्लास लेता है 210. किसी के घर में शोर आता है कि कोई क्लास लेता है दूसरा. 300 3 7 21 7 21 7 है 21 511. ठीक है. यस सर. अब इसका टोटल देना है. शाबाश, दे दीजिए टोटल. 162 plus 228 plus
444 plus 406 plus 1961. 210 plus 511. 1961. Okay, 1961. 1961. 1961. इसका वेट का टोटल क्या आ गया? 5 का अर्धा अर्धा जूत आ गया अकू तो 7 के 28. इसका 28 आ गया. ठीक है. अब ये दो वैल्यूज इसमें लगाइए. देयरफॉर x बार w इज इक्वल टू 1961 डिवाइड बाय 28. Therefore, x bar w is equal to 1961 को 28 से डिवाइड कर दीजिए. 70.03. 70.035 7 कुछ 70.04 लिखेंगे. ठीक है. ये है हमारा वेटेड मीन. ये है हमारा Weighted mean. वेटेड. Yes, Weighted mean. अब आएगा आपको खुद ये सॉल्व करना है. yes sir, आएगा. जी जी सर. sir. मैं क्वेश्चन दे दूंगा, है ना? Yes Okay, sir, sir. दीजिए. हाँ. ये हो गया. Yes sir. गोवा. Yes sir. क्वेश्चन लिख लीजिए. Calculate weighted mean from the following series. Calculate weighted mean from the following series. Items and weight. Items and weight. Items ये समझो ये x है और ये w है. 5 10 25 20 5 10 25 20 25 and 30. वेट क्या क्या है? 8 4 5 10 7 6. ये है क्वेश्चन. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन मत लोगे. सर दीजिए. दूसरा क्वेश्चन. The following table shows price of 100 grams of tea of different brands. Following table shows price of 100 grams of tea of different brands. Of different brands. Of different brands. Using quantities as weight. Use quantities. Use quantities as weight. As weight. Find out weighted mean. Weighted mean. Price per 100 gram. Price
per 100 gram of tea quantity. ये दूसरा क्वेश्चन है. लिखिए 3 नहीं सॉरी यहां 2 लिख लीजिए. 2 3 नहीं 2 2 3 4 5 6 10 8 9 5 6 3 5 6 कितना है 1 2 3 4 5 6 इसका साइन 1 2 3 4 5 यहाँ लिखिए 7 नीचे 7 लिख लीजिए. ये इस तरह क्वेश्चन है. 10 8 9 5 10 8 9 5 6 3 ये है क्वेश्चन. ये समझो x है, ये समझो वेट है. टेकिंग क्वांटिटीज एज वेट. यहां है ऊपर लिखा है ना टेकिंग क्वांटिटीज, यूज क्वांटिटीज एज वेट. तो दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. अब हमारा जी सर. दूसरा पार्ट है इसका, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन. ये हो गया, उठाया ना ये. यस सर. हाँ जी सर. यस. लिख लीजिए मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन. आज तक हमने मीन पढ़ा है, सेंट्रल टेंडेंसी का पहला ये रूल. ये हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, इसका पहला रूल है अरिथमेटिक मीन. इसमें हमने दो पढ़े हैं, सैंपल अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन. पहले लिख लीजिए मेरिट्स. मेरिट्स क्या क्या है? मेरिट्स क्या क्या है? फर्स्ट मेरिट इज from the viewpoint of calculation and usage, arithmetic mean is simplest of all the measures of central tendency. Thus we can say it is simple to calculate. It is simple to calculate than other measures of central tendency. Than other measures of central tendency. CT means central tendency. Number second is, it is arithmetic mean is a central value. There is certain value. It is a certain value. Certain value and true representative and true representative average है, true representative average. नंबर थर्ड लिख लीजिए, arithmetic mean is based on all items in a series. It is based on all items in a series. In a series. So it is based on we take all items into consideration. ये ऐसा नहीं है कि हम सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू जो बीच के वैल्यूज हैं वो हम छोड़ देते हैं, बट वी टेक ऑल वैल्यूज, उनको भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं. नंबर फोर्थ इज, it is capable of further algebraic treatment.
it is therefore extensively used in statistical analysis. So it is capable of further algebraic treatment. It is capable of further algebraic treatment. It is a suitable measure of central tendency. This is because changes in sample of a series have minimum effect on the arithmetic mean. So it is a suitable measure of, central tendency. Suitable measure of central tendency. Being stable and certain, arithmetic mean can be easily used for comparison. It is easily used for comparison. Because it is suitable and certain. It is suitable and certain. You should suitable to certain. You should change frequently. Agar sampling change, if we change the samplings, its value does not change. It does not affect at large extent. So it is largely used for comparison. Arithmetic mean can be tested for its accuracy as a representative value of the series. So it is authenticity, it is suitability, it is certainty can be tested, or its accuracy can be tested. It is accuracy can be tested. It is accuracy, ACCU or ACY. Its accuracy can be tested. Shabash. So these are some merits of arithmetic mean. Now you write down some demerits of arithmetic mean. ये लिख लिया? Yes, sir. Yes. तो डिमेरिट्स हम उठाएंगे इसके. Demerits. Number first, it is affected by extreme values. It is affected by extreme values. It is affected by extreme values. The main defect of arithmetic mean is that it gets distorted by extreme values. Therefore, it is not always an accurate measure. So sometimes we do not take it as accurate measure because it is affected by. So sometimes it is not taken as a true representative. That is why it is not. That is why it is not considered as a true representative. So it is affected by extreme values. Extreme values means the lowest one and the highest one. The lowest value and the highest value. Number second is
The mean value may sometimes be that value which does not figure in the series. Next, its defect is the mean value. ये जो mean हम निकालते हैं, it cannot be in the series. It is not in the existing in the series. The mean value may sometimes mean value may sometimes be that value. It can be that value which do not exist in the series, which do not figure or exist in the series. Figure or exist in the series. This is second demerit. Number third is, even then it has less demerits. Arithmetic mean is not suitable measure in case of percentage or proportionate values. It cannot be a suitable, it cannot be a suitable measure in case of percentage or proportionate values. In case of percentage or proportionate values. When our values of the variable are in terms of percentage or proportionate. In case of percentage or proportionate values, at that time it cannot give suitable measure. Number fourth is, arithmetic mean sometimes gives misleading conclusions. It can give misleading conclusions. It can sometimes give misleading results. So these are some defects or demerits of this arithmetic mean. Yes. Yes, these are some demerits. So इस तरह हमने कंप्लीट किया है अरिथमेटिक मीन. जिन बच्चों ने क्लास नहीं ले लिया जूम पे ऑनलाइन पे, तो मैं रेगुलरली वीडियो डालता हूं ग्रुप में, वो देख लीजिए. वो अच्छे वीडियोस हैं. जो हम यहाँ पढ़ते हैं वही वीडियो में है. बिल्कुल जो आज मैंने पढ़ा ये मैंने अभी सेव किया, ये साथ सेव किया, तो मैं यूट्यूब पे ये अपलोड करूंगा और यूट्यूब लिंक आपको ग्रुप में डालूंगा. समझ आ गया मैं क्या करता हूं? अब मैंने आपका क्लास ले लिया, जब क्लास स्टार्ट किया तो उसी वक्त रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की. ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो गया, तो मैं ये अभी यूट्यूब पे जो इससे पहले जो लेक्चर थे सर वो वहां से निकलेंगे. चैनल है ना मेरी यूट्यूब लिंक से. हाँ यूट्यूब लिंक से सारे के सारे लेक्चर ग्रुप में भी है, मौजूद ग्रुप में भी है. और ग्रुप में आप किसी लिंक पे आप क्लिक करो तो वहां लेक्चर मिलेगा. यूट्यूब चैनल भी है इकोनॉमिक्स विद मंजूर सर, तो वो आप क्लिक कर दीजिए तो मेरे सारे लेक्चर जितने मैंने जूम पे ले लिए, ऑफलाइन दे दिए, वो वहां मिलेंगे आपको. तो कल मैं उठाऊंगा मीडियन. टुमारो आई विल टेक मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा है. आज के लिए काफी है? ठीक है. यस सर. इतना काफी है. यस सर. 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए. जो मैं होमवर्क देता हूं ना वो करना है, वो सॉल्व करना. आज बहुत सी बच्चे आई हैं, आपको वेलकम. तो कल और बच्चों को बताना कि जूम अटेंड कीजिए. मैं देखूंगा अगर 10 बजे ही क्लास हो गया ना, कल से हम 10 बजे ही करेंगे. आज मत वो रोजदरी मजे उस चेयर तय निंदर पे तब तो यला आसा. ठीक है कल मैं देखूंगा. तिल त्रामो लिंक. ओके सर.
Okay, thank you very much. कोई problem? Yes. Problem मत शिकायत. No, sir. Okay, No, sir. thank you very much. Thank you very much.